decomposition. Second topic is eigenvalues. And third is STD. So we'll try to cover these, we'll try to cover in this sequence जहाँ तक हम पहुँच सके, ठीक है? ये हम इंशाल्लाह आज cover करेंगे. Before that I have a question. Question क्या है? Arbitrary axis के बहुत रोटेशन कैसे होती है इसको चारे में बड़ा से एक्सप्लेन कर दिया गया, तो मैं आज करता हूँ. फर्ज करें आपको एक एक्सिस गिवन है V और आपको एंगल गिवन है थीटा, सही है? अगर मुझे रोटेशन x एक्सिस के अबाउट या y एक्सिस के अबाउट या z एक्सिस के अबाउट करनी हो तो उसके मैट्रिसेस में लास्ट टाइम ड्राइव आपको करके दिखाया तो मुझे करना है. लेकिन अगर किसी आर्बिट्ररी थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई एक आर्बिट्ररी एक्सिस है, कोई एक एक्सिस है जो x y या z एक्सिस के अलावा है, लाइन है, अगर मैंने उसके अबाउट रोटेशन करनी है तो व्हाट शुड बी द रोटेशन मैट्रिक्स, सही है? सो लेट्स से दैट एक्सिस इज v and this angle is theta. Okay, so I can build a matrix where the v is my first row, and from the entries of v I can construct another vector that we call it A1, which is orthogonal to v. और ये मैं बड़ी आसानी से बना सकता हूँ. अगर मुझे v के एंट्रीज पता है तो मैं एक ऐसा वेक्टर बना सकता हूँ जो v के ऑर्थोगोनल है. मिसाल के तौर पे अगर v की एंट्रीज हैं v1, v2, v3, तो मैं एक ऐसा वेक्टर बना सकता हूँ a, b, c such that given these three entries, what are these three entries so that the product is 0. तो मैं c और v को randomly choose कर लेता हूँ और a जो है वो इक्वेशंस निकल आए. So I can always build this A1. I can construct this A1. Okay? Once I have v and A1 orthogonal to each other, I can take cross product of v and A1 and I can generate A2. This cross product ensures that A2 is orthogonal to both of these. Okay? So v cross product. अब ये जो तीनों हैं ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है? लेकिन इस मैट्रिक्स को स्पेस पे अप्लाई करने का इम्पैक्ट ये होगा कि हर वेक्टर अपनी अपनी जगह पे रोटेट होना चाहिए. चूंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये रोटेशन करेगा, लेकिन वो जो वेक्टर v है वो x एक्सिस पे मैप करेगा. यस, वो मैप कैसे होगा? बिकॉज v टाइम्स v1 these two are orthogonal to this. So जब मैं पूरी स्पेस पे ये मैट्रिक्स A अप्लाई करूंगा तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट गोज टू x एक्सिस. अब x एक्सिस के अबाउट मुझे रोटेशन करना आती है. देयर इज अ मैट्रिक्स दैट रोटेट्स अबाउट x एक्सिस. तो मैं ये मैट्रिक्स A अप्लाई करने के बाद x एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा और फिर जो A ने इंपैक्ट डाला था वो मैं वो इंपैक्ट नलिफाई करूंगा and I will apply the inverse of it. So that's the whole idea. I will first apply A to the space, then I will apply Rx with an angle theta, and this is known. Then I will apply A inverse. It just so happens that this A is an orthogonal matrix, so the inverse of A is simply the transpose of A. So this is the rotation matrix that rotates about V with an angle theta. Yes? Was that your question? Yes. Is there any mention of taking the second matrix? You take the V first time and you can take the A1 or A2. Sorry? तो जो आपने मैट्रिक्स से यहाँ पे ली है V, तो हमने इस पहले दफा भी कन्वेंशन है कि हम पहले A B ले लेंगे, पहले A ले सकते हैं. अगर आप V को फर्स्ट रो लेंगे तो यहाँ पे x एक्सिस पे ये मैप होगा और x का मैट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप V को एज अ सेकंड रो ले लेते हैं तो यहाँ पे आप y का अगर V को थर्ड रो ले लेते हैं तो g का लगा देंगे. It's up to you. The overall the resultant matrix will not change. It will stay the same. Clear? Yes, sir. Okay, orthogonal projection. ये फर्ज करें कोई वेक्टर स्पेस है. दिस इज सम वेक्टर स्पेस और इस वेक्टर स्पेस के ये कुछ बेसिस वेक्टर्स हैं. v1, v2, v3,
k डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसके k बेसिस वेक्टर्स होंगे और फर्स्ट करेंगे वो बेसिस वेक्टर्स लिए v1 v2 v3 vk मेक सेंस हर वेक्टर या हर पॉइंट वेक्टर और पॉइंट को मैं इंटरचेंजेबली इसके लिए यूज करता हूं पॉइंट कहता हूं एज यूनिट पोजीशन वेक्टर हर वेक्टर या हर पॉइंट इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशंस के तौर पे लिखा जा सकता है सो अगर ये पूरी एक वेक्टर स्पेस है V then any element that belongs to V has this form is sum alpha 1 times V1 plus alpha 2 times V2 plus alpha k times Vk अगर कोई एलिमेंट इस स्पेस का है तो वो बेसिस से लीनियरली जनरेटेबल है यस नो इस सम को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं अगर v1 मेरा कॉलम वेक्टर हो v2 मेरा कॉलम वेक्टर हो vk कॉलम वेक्टर हो which is the convention then I can write this sum as v1 v2 vk matrix times alpha 1 alpha 2 alpha k so if you multiply this then you will get this thing again okay I need not to be fast. आप देखें अगर यही है तो जी अगर आपके पास एक कॉलम वेक्टर है let's say 2 3 और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ प्लस 1 9 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप -2 के साथ then this can be rewritten as 2 3 1 9 matrix times 4 minus 2. If you multiply these two together, you get this sum again. Yes? Yes. No? Okay. Consider a dot product. Let's say this is A. Let's say this is V1, and let's say V1 is some real number. Let's say this is V2, this is some real number. And let's say this is a column 3 and 4. Okay, that's a dot product. What is this? 3 times V1 plus 4 times V2. Yes? The definition will stay true even if this V1 and V2 are columns. Make sense? I mean any elements. Yes, no? Great. So I can write this sum as V1, V2 and Vk with A1, A2, A3. V1 to V3 the vector alpha 1 Here these are real numbers, scalars. And this is a linear combination. Remember in the very first lecture we taught about this. And ये जो बेसिस का ये जो मैट्रिक्स है ना मैं इसको कह रहा हूँ मैट्रिक्स A जस्ट अ कन्वेंशन इसके कॉलम वेक्टर्स दे आर बेसिस और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इस बेसिस के इसको मैं फिर डाल दिया x यस सो हर पॉइंट जो स्पेस का है इट इज ऑफ दिस फॉर्म ax a फिक्स है x चेंज करते जाएं इस स्पेस के मुख्तलिफ पॉइंट्स निकलते जाएंगे यस सो द ith point in this space has this coordinate vector basis fixed. Yes, no? कोई भी पॉइंट कोई भी वेक्टर जो स्पेस का है चूंकि कोई k वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है लिहाजा ये वेक्टर तो वही रहेंगे ये वाले वैल्यूज चेंज हो जाएंगे कोई और पॉइंट होगा तो उनके लिए ये वैल्यूज फर्क होंगी कोई और पॉइंट होगा तो उनके लिए ये वैल्यूज फर्क होंगी लेकिन हर पॉइंट इस फॉर्म में होगा इट इज a times a vector. Yes, no? So far so good? Okay. Now consider again a vector space, the same vector space. I'm redrawing with V1, V2 and Vk as the basis. And consider a point that is not in this space. Let's say this is some point that is not in this space. Consider this space is a 2D plane
where the bases are V1 and V2 only, and there is a point that is outside the plane. Okay? अच्छा. Now tell me some point in this space that is closest to this point. I'm calling this point as B. Or let's say there is some origin. There is some origin. Just say V1, V2, और ये सारे वेक्टर हैं V के. उस origin से let's say this vector is B, but B is not in this space. Okay? इस स्पेस के अंदर वो पॉइंट बताएं जो इस पॉइंट के क्लोजेस्ट हो. वो पॉइंट ऐसा होगा, यानी इस स्पेस के अंदर वो पॉइंट जो इसके क्लोजेस्ट है, इस स्पेस के अंदर वो पॉइंट होगा कि उस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर मैं ज्वाइन करूं, then this vector will be perpendicular to the space. Yes, no? Yes. Yes, no? Yes. दोबारा से देखिए, स्पेस के अंदर वो पॉइंट जो B के क्लोजेस्ट हो, स्पेस के अंदर ये वो पॉइंट होगा कि जब मैं B से उस पॉइंट को ज्वाइन करूं, तो ये जो ज्वाइनर वेक्टर है, ये पूरी स्पेस में परपेंडिकुलर हो. So far so good? स्पेस में परपेंडिकुलर होने से मुराद है उसके बेसिस वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि अगर बेसिस वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर है तो हर वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा. ठीक है जी? So I'm calling this, by the way, if this vector is B and this vector which is closest to it, which we do not know which vector is closest to it, but because this vector is in this space, this vector has the form AX. ये जो point है, इसकी form है AX. सही है? A is the basis. ये है B. ये जो vector है ना, ये वाला, ये है B minus AX. Yes? ये जो vector, by hand to play. This is B minus AX. If this vector is B, this is AX, and this vector is B minus AX. Then B minus AX must be perpendicular to the basis of the space. Yes. Such an X, if found, then that X along with A will give me a point that is closest to this point. दोबारा से सुने. X हमने निकाला, A तो फिक्स है ना. कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, x की वैल्यू फर्क लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, x की और वैल्यू लगाएंगे. कौन सा x लेके आए सो दैट कि जो पॉइंट है वो b के करीब करीब हो जाए. वो x वो होगा जो b minus ax को स्पेस पे परपेंडिकुलर कर दे. ऐसा x. यस नो? स्पेस पे परपेंडिकुलर से मुराद ये है कि वो फर्स्ट बेसिस के परपेंडिकुलर हो. फर्स्ट बेसिस टाइम दिस इज इक्वल टू 0, सेकंड बेसिस times this is equal to 0 and so on. It should be perpendicular to all the basic vectors. अगर मेरे पास V1 जो है वो कॉलम फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं V1 का ट्रांसपोज लेता हूँ. तो V1 ट्रांसपोज टाइम्स ये एरर है, ये जो वेक्टर है. इन दोनों का डॉट डॉट should be 0. That means this vector is perpendicular to the first basis, and this vector should be perpendicular to the second basis. This vector should be perpendicular to the third basis and so on. This vector should be perpendicular to all basis vectors, which means its dot product with every v should be 0. Yes. अब चूंकि A के अंदर हमने ये जो v रखे हैं A के अंदर, वो कॉलम फॉर्म में प्लेस हैं. अगर मैं A का ट्रांसपोज ले लूं, तो हर कॉलम रो बन जाएगी, and this will give me dot products. पहला डॉट प्रोडक्ट पहला 0, दूसरा डॉट प्रोडक्ट दूसरा 0. This 0 is a 0 vector. Yes, no? Yes. I might be moving fast. जी दोबारा से बताता हूँ. ये तो क्लियर है कि I need this. ये क्लियर? And I need this. Basically, I need this for all I need this. This vector should be perpendicular to every basis. Make sense? ये clear है या नहीं? ये clear है? Yes. Then अब ये कितनी इक्वेशंस बनेगी? हर आई के लिए एक इक्वेशन बनती जाएगी ना? इन सारी इक्वेशंस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो यहाँ पे एक ट्रांसपोज लिख देता हूँ. So इसमें V1, फिर दूसरी रो V2, तीसरी रो V3 and so on. और जो जवाब आएगा इसमें राइट साइड पे काफी सारे जीरोस होंगे.
सो बेसिकली अगर मैं इसको जीरो वेक्टर कह दूं, आई वांट टू सॉल्व दिस। अगर मुझे b गिवन हो, यानी वो पॉइंट जिसका क्लोजेस्ट पॉइंट मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, और स्पेस के बेसिस वेक्टर्स गिवन हो, इस स्पेस में वो पॉइंट ढूंढो जो इस पॉइंट के क्लोजेस्ट है, तो आई कैन फाइंड आउट दैट पॉइंट यूजिंग दिस इक्वेशन। So far so good. And this gives me A transpose B minus A transpose A x is equal to 0, and that gives me A transpose A x is equal to A transpose B. Yes? Yes. And that gives me x is equal to A transpose A inverse A transpose B. This is the x. Yes. सर जो आपने पहले बी लिखा था उसका आपने ट्रांसपोज और क्योंकि मैंने b और ओरिजिनली जब प्लेस किए थे तो कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में प्लेस कर दिया। ये भी एक कॉलम वेक्टर है, ये भी एक कॉलम, b खुद कॉलम वेक्टर है, ये भी एक कॉलम वेक्टर है, तो ये भी कॉलम वेक्टर रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए यहाँ उसको रो फॉर्म में प्लेस करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आएगा। यस, दिस वन ये a ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करता है, a ट्रांसपोज इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। सर ये b की जगह पे x है और ये b की जगह पे नहीं है, a ट्रांसपोज में b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a ट्रांसपोज इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a ट्रांसपोज b माइनस a ट्रांसपोज a x। सही है? और ये ट्रांसपोज b इधर लेके आए, ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला, सही है? ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, and x is equal to this। सर इस स्पेस में सारे पॉइंट्स बी से परपेंडिकुलर नहीं, इस स्पेस में जितने भी सारे वेक्टर्स हैं वो बी से परपेंडिकुलर नहीं सर, लेकिन this is a space, 2D space कह सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट, अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर है इसके। अगर मैं इससे ये वाला वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो मुझे तो सिर्फ ये पॉइंट गिवन है ना, मैंने वो पॉइंट ढूंढना है कि जब मैं इसको इससे जॉइन करूं इट बिकम्स परपेंडिकुलर, दिस वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू दिस स्पेस बिकॉज़ दिस गिव्स मी शॉर्टर डिस्टेंस। Yes, no? And this is called orthogonal projection, यानी वो स्पेस का वो पॉइंट जो डिस्टेंस को मिनिमाइज करता है, that must be projected orthogonally onto the space. And so this projection is called orthogonal projection. Make sense? Yes, no? एक चीज यहाँ पे और गौर से देखें, ये जो बेसिस है ना, मैंने यहाँ पे बिल्कुल assume नहीं किया कि ये जो बेसिस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। Basis might be linearly independent. I mean, basis के लिए linearly independent होना जरूरी है, basis के लिए perpendicular होना जरूरी नहीं है। अगर perpendicular हो तो उसका added advantage मैं भी बताऊंगा आपको। Yes? यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल assume नहीं किया कि these v1 dot v2 is equal to 0. No, they are just linearly independent. One v is not generatable by the rest, so they are linearly independent. That's all. Clear? In addition, अगर आपको बेसिस परपेंडिकुलर मिल जाए, इस स्पेस की कई बेसिस है ना, एक ऐसी बेसिस आप ढूंढ लें जो परपेंडिकुलर हो, then you can see this A matrix will become orthogonal। अगर ये सारे कॉलम्स परपेंडिकुलर हों पेयर वाइज, the matrix will become orthogonal। so यानी अगर रो सारी परपेंडिकुलर हो म्यूचुअली, या कॉलम सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, it becomes orthogonal। and this A transpose A, this becomes an identity matrix। यस And in that case, your x is simply A transpose B। यानी आप पॉइंट को पकड़ें और हर बेसिस पे इंडिविजुअली डॉट प्रोडक्ट करना शुरू करते हैं। यानी अगर आपने पहला कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले एक्सिस का के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लें, दूसरा को निकालना है तो दूसरे एक्सिस के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लें। क्लियर है? यस नो? यस नो? दिस वन देखें, अगर A के तमाम कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल हो, यानी वो म्यूचुअली उनका डॉट प्रोडक्ट 0 और हर एक की मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड 1 हम कर लेते हैं बेसिस वेक्टर, वी आर कंसर्न्ड विद डायरेक्शन नॉट विद मैग्नीट्यूड, देन यू कैन सी दैट A ट्रांसपोज A becomes identity। Straightforward? Identity inverse is identity, so this goes away। अगर आपकी बेसिस ऑर्थोनॉर्मल हो, your projection simplifies to individual projections। ये क्या चीज़ है? ये है कि B का V1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लो,
दैट इज द फर्स्ट अल्फा, B का V2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, दैट इज द सेकंड अल्फा, B का V3 के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, दैट इज द थर्ड अल्फा। अगर आपकी बेसिस ऑर्थोनॉर्मल हो तो फिर अल्फास निकालना इज वेरी सिंपल। Pick B, project onto one axis, that gives you one coordinate. B projected on other axis gives you another coordinate. अगर आपकी axis orthogonal ना हो, then you have to go through the pain of computing this inverse. So that's one benefit of having orthogonal bases or working with the bases that are mutually perpendicular. Yes? Make sense? So far so good? Then if in that space some of the spaces are orthogonal, then other that are not orthogonal, then can you build from that orthogonal? Yes, yes, yes. अगर ये सारी ऑर्थोगोनल, मैं अभी ये थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि अगर बेसिस ऑर्थोगोनल ना हो तो उनको ऑर्थोगोनल करते कैसे हैं। That precisely is what RQ becomes. अगर आपके कुछ वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल नहीं है, आपको उनको धक्के से ऑर्थोगोनल बनाना है, so you can make it. And that process is called Gram-Smith orthogonalization, and that is heart of this RQ decomposition. एंड डायमेंशन स्पेस उसका नाम भी होगी ना, एंड डायमेंशन स्पेस, क्योंकि अगर तो 3D स्पेस में तीनों वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हो जाते हैं, उसके मुताबिक अगर आप फोर डायमेंशन भी कैसे बनाएंगे उसके अंदर परपेंडिकुलर करके व्यू नहीं कर सकते। अगर आपके पास चार वेक्टर्स हैं, आप किसी भी पेयर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो 0 आता है, कोई चार आपस में परपेंडिकुलर है, आप लोग ये नहीं कर सकते, दैट्स फाइन। बहुत सारी चीजें आप ये नहीं कर सकते। मेक सेंस? बाय डेफिनेशन वो प्रॉब्लम है। चलिए आगे। Yes, no, yes. जी बेटा। V आपस ये बेसिस का आपस में ऑर्थोगोनल होना जरूरी नहीं है प्रोजेक्शन के लिए, जरूरी नहीं है। V1 डॉट V2 is not necessarily 0. हर V B के साथ ऑर्थोगोनल होगा तो वो पॉइंट मिलेगा जो इसके क्लोजेस्ट है। हर B B के साथ ऑर्थोगोनल होना पड़ेगा, B के साथ ही, सॉरी B माइनस AX के साथ, B इस वेक्टर के साथ, B के साथ इस वेक्टर के साथ। देखिए ये स्पेस है, ये कोई पॉइंट है, मैं इस पॉइंट का क्लोजेस्ट पॉइंट स्पेस में ढूंढना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं ऐसे पॉइंट से ज्वाइन करूंगा कि ये डिस्टेंस कम से कम हो, और वो डिस्टेंस कम से कम करने के लिए ये जो मैं जिस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये स्पेस के ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। स्पेस के ऑर्थोगोनल होने से मुराद ये है कि इसके हर बेसिस के इंडिविजुअली ऑर्थोगोनल हो, लेकिन वो वेक्टर ये है, ये वाला वेक्टर है जो पूरी स्पेस का ऑर्थोगोनल है, B माइनस AX। X की क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी चलिए चलिए आगे। अच्छा, अब एक चीज और देख लें, ये जो x है ना, ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं यहाँ पे इस स्पेस के अंदर, V1 का कोऑर्डिनेट, V2 का कोऑर्डिनेट, V3 का कोऑर्डिनेट। अगर मैंने इस स्पेस में उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो अगेन मुझे x को a से मल्टीप्लाई करना है। सो x मैंने निकाल लिया, नाउ I multiply a with x and this is the point in the space that is close to B, as I'm going to show you.